Malik. LPS won't build first. कौन है अब ये देखो शुरू में कौन तार दिया हैं बैटिंग पर कौन संजीव सर है ना कैमरा नहीं आया स्ट्राइक पे कौन है कोई दोनों माइक अपने पास है ना सिमरन एक तरफ तो भाई साहब कैमरा नहीं आया भाई साहब कैमरा नहीं आया भाई साहब पूछियो सिमरन और अमित अरे टॉस कौन जीता पता है आपको हाँ LPS फील्ड बॉलिंग कौन है सर बॉल करने वाली सर कैमरा नहीं आया सर ये बात कौन बॉलर भाई रुक जाए लंबे से So the final game of the day, LPS taking on the Indian Sunrisers, and first delivery straight away pulls it towards the backward square leg region, gets a single off the mark, up and running straight away. The skipper himself leading the team from the front. सनराइजर दी इंडियंस सर एक बॉल पड़ चुकी है सर आधा खड़ा होकर So मैच स्टार्ट हुआ है the batter facing her first delivery, the bowler running in. That's a good looking stroke, sweeps it away right in the gap. The fielder giving it a chase. Will be at least a couple of runs. In fact, they come back for the third as well. There's excellent running between the wickets, remarkable stuff. And to top it off, they also think of a fourth there. This is a positive start, and also a request to both the teams to send in a representative from your team. So LPS and Sunrisers, please send in one of your representatives to the scorer's desk. Looks to heave it away towards the offside. Wide signal. Rather, I was mistaken. It's rather Amit who's been sent to open by the team management. So Amit, he's got an interesting stance. He's slightly facing towards the onside, so you know that he's predominantly looking for that onside region. But also, from the start, you know that he's good throughout the offside as well. He's good all along the park. And this is a very good start as far as the Indian Sunrisers are concerned. It's been a positive one. And Manish, he's running in. That's another good stroke. Nicely getting on top of the bounce, works it away towards the point region. And they come back for the second. That's good stuff. That is good stuff. And that's what I mean by saying you've got to be switched on at all times on the field. And the batters were aware to that opportunity of a second there. They come back for two. Every single run counts. The Indian Sunrisers 7 for no loss. 2 more deliveries to go in this first over. That's another good stroke. Right through the gap. There is a sweeper cover. You'll only get a single. Remember, the initial first few overs are the power play overs. And both these batters have started on a positive note. ये रहा ना इसका चार्जर लगा ही लो ना जुड़ता है आपको यार जब तो क्या है ये रहा तो बंद करके रखा इन्होंने Final delivery of the first. That's aerial. That's high in the air. That could be taken. And it's been put down. That's been put down. There's a shy at the stumps as well at the non-striker's end. A double luck there for the batter, and they get a single. She will keep strike as well. That's the end of the first. The Indian Sunrisers, they're 9 for no loss. And this is a positive start, as I stated. And that's what this team is all about. Both LPS and the Indian Sunrisers are formidable teams. And they will be looking to go one up in this opening encounter of day one.
Now both the teams from the second match, please come at the banner for the presentation ceremony. Daring Divinians and VSPK finishers. As we request both the teams, VSPK finishers and Daring Divinians, please come at the banner for the presentation ceremony. लगवाया नहीं आपने सर यहाँ पे बटन होता है। हाँ हाँ ये तो याद है भाई, मुझे याद नहीं है तो सर इसी वही बंदा है बीएनआई के मैच में दबा दिया पटक के। ऐसा तरह का बंद हो गया। हेलो आपकी है? हाँ अरे मेरी है भाई फिर आज तो क्या करूँ मैं? ये काम हो गया मेरा अब। हो गया था बैंक हो गया था चेक लगवा दी आधा पैसे चेक करवा लेंगे रकानों को लिखा काट दिया क्या करना है? राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होती। हाँ सारी कितनी एडिट करी है ना, राइटिंग राइटिंग में बेकार है। वो तुम लिखो। एडिट देखा आपने इसका? बेकार है। अरे एक ही टोपी है ब्लैक कलर की भाई दूसरी ला दूंगा एक ही टोपी है ब्लैक कलर की So it's a request to VSPK. The team is required here for the presentation. We're ready for the presentation, VSPK. कहाँ है वो? यही तो है VSPK। वो है। So VSPK, if we could kindly have you for the presentation ceremony. So this is a brilliant. अनाउंस कर देना स्कोर एक बार। सर एक बार स्कोर अनाउंस कर दो। आफ्टर ओवर कर दिया करो। आफ्टर ओवर कर दिया करो। हाँ भाई यार तुम भी स्ट्रीमिंग चल रही है, लाइव देखो ना। वो नहीं देख रहे ना। क्यों नहीं देख रहे? So excellent start. माई के ऑफिस है। मैम आवाज तेज रखना थोड़ी। तेज लाउड। And now it's the time for the presentation ceremony. We request both the teams, VSPK finishers and Daring Divinians, please come at the flex for wonderful presentation ceremony. Sanjay sir, please join us.
We have Yash sir, Sanjay sir. Oh. Hello, hello, hello. It's time for the presentation ceremony. वो तो बहुत हो रहा है ये राहुल को देखो यहाँ पे छोड़ के गए मुझे कह रहे पिछले मैच में दिया था दूसरे बजाओ भाई कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या बिगड़ गई मत बजाओ भाई इधर जूम कर दे इधर जूम कर इधर यहाँ पे 26 ओवर का थोड़ा पीछे कर थोड़ा पीछे कर थोड़ा पीछे कर थोड़ा पीछे कर Yes, we have all the captains, और जूम कर दिलीप our observers आजा ढल्ली with us for the second match for Civica. आजा सिखा दो Speak a finisher, hitting this at by 62 runs. But a wonderful performance by the speaker finisher. यहाँ पे आओ इसको Splendid performance by this team. And let's head towards yes, prizes. It's batsman of the match goes to Sagar. Splendid dog played by Sagar. Get the award by our senior vice president. In fact, he's getting both the awards. He's getting bowler of the match as well. So bowler of the match also goes to Sagar. Yes, getting both the awards. Congratulate Sagar for getting both the awards, being batsman of the match and bowler of the match. Such an all-in performance by this man. Now time for appeal the match. Thank you, Sagar. Female player of the match goes to Dropti. Dropti, please come. Such a wonderful performance by Dropti. He's getting trophy from Sanjay sir, Senior Vice President of TCC. And now it's time for the star performer of the match. For the losing team, it goes to Vishal.
Good performance by Vishal. And now it's time for the captains. Yes, sir, how are you feeling? एक कैमरा उसके ऊपर जिसमें पीछे दिखाई देगा, एक उसके सामने। एक मेरी तरफ। तीन लगनी है बल्कि। तीनों कैसे? जो कटआउट यहाँ पीछे आप लगाओगे ना पूरे माइक साउंड, माइक का हेलो मैम मैम वो उनका पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं। हेलो Wonderful. Very hard in the past few months, but it was honestly it was not our day, and there was some miscoordination. The connect between the players was not up to the mark as we practiced, as we tried. But honestly, it is a learning from us, and there is a long way to go. Winning and losing something different, but we really strive really hard for a befitting performance, and we know our mistakes, so we're gonna rectify, and we'll be coming again. So that's not the. Thank you so much, and congratulations. That's the spirit. Thank you. Thank you, sir. And yes, some words from you as well, sir. Well, this was the second match of the tournament, and undoubtedly, both the teams played very well. And congratulations to VSPK finishers. But I must say one thing, Manan sir, जो आपने dive लगाया, that was the dive of the day. And this is part of the game, you know. One team wins and one team loses the match. और ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए दोनों teams और बाकी teams जो हैं, they will put in their best efforts. Best wishes to all the teams. And yes, sir, what you will say? What you will say? Something. हम तो जीत गए। I would just like to say congratulations to VSPK and hard luck to Mother Divine, but there's still 2 matches to go and we can obviously hope कि आप जीते and अपना best से best performance जो सबने दिया है वो ही continue रहे और tournament ऐसी as I said कि चलता रहे. And yes, such great words from both the observers. So once again, we congratulate VSPK finishers for winning this match convincingly. And yes, back to action. अब ये तो बताओ। हेलो चालू है। डेट शो कर रहा है 31 दूसरा मैच इसमें बोलो मोनो है वो उसमें बोलो So Teen and Sunrise are still in a very good position, you'd have to say, even though they lost that wicket courtesy a run out. Start off the 5th over, and the bowler coming in, having a word with his captain, probably placing his fielders according to his liking. इतना नखरे तो भाई मैं लुगाई के ना ले
So Nitin, the star player for LPS, he'll be bowling his first, also the fifth over of this innings. And Wasim Mohammed, he's out there. What a player he has been for the Sunrisers since the inception of this tournament. Starts off with a wide, not the best of deliveries by Nitin Bhatia to begin with. A hint of width. Once again, looks to work it away towards the offside, looks to cut it away. Swing and a miss. That's a dot. That's much better. That's well within the tram line. That's what he was trying to do in the previous delivery as well, Nitin Bhatia. And Wasim has played just 2 deliveries. He's just walked out after that run out. The Indian Sunrisers have got off to a very good start, you'd have to say. And both these teams are so strong. Be it their bowling, be it their batting, even the outfielding. They are a well-rounded unit. And they'll be vying for that big trophy, that championship this time around. All the 7 teams are taking part this time around. They have a chance to clinch the cup. Simran, meanwhile, how good has she looked? Ducks underneath that one. We'll wait for the signal from the umpire. It is a no ball. So a no ball, and it will be a free hit. So swing and a miss, gets away with that one, Nitin, and the free hit remains. The free hit remains, so we'll have the license, Simran, to go for it. So free hit delivery once again. Here we go. She's connected that one well. That's in the gap as well. That might just run away. But the fielder does exceptionally well. Makes up good ground. Keeps it to 2. Simran moves to 17 of 12. What a knock this has been. And that's again a full toss. Heaves it away. Cross-batted swing towards the onside. Gets another single. No signal from the umpire this time around. Dishing out full tosses is Nitin Bhatia. Wasim back on strike. Has a look around the field. And Wasim, he's a star attraction in this fine lineup that the Indian Sunrisers have. Just turns the bat towards the offside, opens the face of the bat at the last moment, gets a single, gets Simran back on strike. Simran batting beautifully, batting on 18 at the moment. Final delivery of the 5th over coming up. Not the best of starts as far as Nitin is concerned. Generally, an efficient bowler. He's so good. He's so good with his lines, his lengths, varies his pace nicely, keeps the batters guessing. Simran looking to advance down the track, looking to use her feet, and ends the over with a dot. That's the end of the 5th. 9 runs coming in that over. The Indian Sunrisers, they're 40 for 1. कर दिया क्या है JBMR sports in associations with themed voice sessions चलाते ना with गब्बर कहानियां ये तो भैया वो भाई
ये अपने काम करवाता रहेगा। अरे ये वाला तो अलग है भाई, ये तो हाई लेवल वाला है, इसमें आप चेंज कैसे करोगे? इसका वो नहीं है, इसका वो तो बैनर So start of the 6th over. Aditi into the attack, and Wasim is played that through the gap. And that's a very good shot, but excellent fielding there. Using his feet to good effect. And they've come back for the third. Would you believe it? That's remarkable running between the wickets. And that is smart thinking as well. Players this time around, since morning, we are seeing that one shot suggests the umpire, so 2 runs will count, but nevertheless, brilliant running between the wickets. The score moves to 42. Bangs it in short, Aditi. That's aerial, but that's safe as well. Should only be a single, will be a single. So Simran moving along nicely. She moves to 19. Wasim back on strike, and even Wasim hasn't got going today, even though he's faced just 5 deliveries. But as we've stated all day long, stroke making hasn't been easy. Aditi might have the longest run-ups amongst all female players, and she's been effective as well. She's been really economical bowling her second. The Indian Sunrisers at the moment approaching a milestone, approaching their 50-run mark, and at a good time as well. Runs have slightly dried up since that wicket has fallen. Simran once again looking to go downtown, yorking herself. That's another dot in the end. This has been a fine over. 4 runs have come off this one so far. 2 more deliveries to go in this over. The penultimate delivery. That's good connection. Straight to mid-on. Slight fumble. Has enough time to get another one. Another single added to the total. Final delivery will be faced by Wasim. Can she finish it off well? That is the question. Shot again. That's pulled away. That's in the gap. There were 2 fielders there. Right in the middle of both of them. Bisecting both these fielders. Wasim gets his first boundary. A hit to the fence to end the 6th. So 49 for 1. The Indian Sunrisers after the 6th over. So at the halfway mark, the Indian Sunrisers, they are 49 for 1. And they're going along nicely, you'd have to say. Simran moves to 20. Wasim has just raised to 10. Got a boundary of the final delivery of the previous over. And jersey number 7 into the attack. He'll be bowling the 7th over, as his jersey states. Just marking his run up there. Simran, meanwhile, she's been out there since ball number 1, and she's looked fairly comfortable. Scoring at a good clip as well, batting on 20. Pulls it slower through the air.
a couple of bounces before it reaches the batter, and that's been signaled a no ball by the square leg umpire, and that's 50 up for the Indian Sunrisers in quick time as well. At the halfway mark, 50 up for them, and it will be a free hit. So free hit delivery, Simran is a batter on strike. Goes big, that's a good shot. Right in the gap. Only a single. Couldn't find the placement on that occasion, the batter, Simran. And Wasim is back on strike, taking on the opposition skipper, who's bowling his first. And the Indian Sunrisers, they'd be really hoping that this partnership can be taken deep. Shot is gone for the pull stroke. That's in the gap for sure. The only thing is, will that travel towards the boundary ropes? It does. The fielder can't stop it. That's another 4. Wasim, in his typical fashion, gets another boundary. Well, the moment he saw that delivery being pitched short, his eyes lit up. Goes again, that's in the gap as well. That's running away, that's trickling away towards the boundary ropes. Might be stopped. It is stopped. भाई इसको समझा दो यार, क्या ये दिमाग तो लगाए यार। बाउंड्री तो लगे, सिंगल पे चला रहे हैं। सिंगल पे चला रहे हैं। क्या हुआ? ऊपर तो हर बार तो करते हैं वो। भाई जब लोग इसको हटा के किस पे इसको हटाया? So Wasim quickly moves to 16. Takes it on the full. That might be in the gap. It is in the gap. The fielder does well. भाई नहीं समझ आ रही उसको यार। अरे बच चल बैठ जा। दो एक और एक बॉलर चला दे भाई, अब तरफ से चला दे। अब चला दो यार। टाइम का चला दो यार। फोकस नहीं है भैया, मैच नहीं देखना मैं। वहाँ वाला माइक ऑन है क्या? वहाँ वाला माइक ऑन है क्या? पक्का ऑन है ना? भाई
डाउन कर दो। 7 ओवर 63, 2 विकेट के नुकसान पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए द इंडियन सनराइजर्स। और इस समय ये जो बल्लेबाजी है उसमें वसीम बेहतर नजर आते हुए, और बढ़िया शॉट इस बीच बाउंस हुआ और केवल दिशा दिखाई उस गेंद को, स्ट्राइक की है रोटेट, और ये सही निर्णय भी, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज जो 2 बाउंड्री की मदद से 11 गेंदों में 19 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। और सनराइजर्स चाहेगी यहां से कम ये जो आंकड़ा है वो 100 के करीब लेकर जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट स्कोर 107 रन के करीब है। बल्ले के नीचे गेंद और ये पकड़ लिया है कैच। ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा इस मुकाबले का, क्योंकि सही समय पर सही चीज हुई है। और द इंडियन सनराइजर्स की जो उम्मीद थी कि शायद यहां से वसीम जो है कुछ बेहतर स्ट्रोक्स खेलेंगे, 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से कर रहे थे बल्लेबाजी, लेकिन आखिरकार विकेट यहां पर मिला है और इस विकेट के चलते तीसरा झटका लगा है और फिलहाल इस मुकाबले में वापसी करती हुई जी हां, संजीव गुप्ता अगले बल्लेबाज और नितिन के खाते में पहली कामयाबी। और इस समय थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि वसीम का विकेट गिरा था, अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन इस समय 8वां ओवर चलता हुआ, इस ओवर के बाद अगर देखेंगे तो 4 ओवर यानी 24 बॉल रह जाएंगे। लेकिन यहां से कितने रन आप जोड़ पाते हैं। अच्छी गति पर वो गेंद, और उसको उतने खूबसूरत तरह से खेले हाथ, स्ट्राइक की है रोटेट। और ये एक पॉजिटिव साइन होता है हर एक बल्लेबाज का कि पहला रन आप जितना जल्द बना लें उतना जल्द आप अपना प्रेशर जो है वो रिलीज करते हैं। और फिलहाल 8.67 का रन रेट, स्कोर बढ़ता हुआ 65, 3 विकेट के नुकसान पर सही समय पर एक कामयाबी नितिन भाटिया के खाते में। और थोड़ा सा दबाव अब आप देखेंगे यहां से, और अच्छी सोच ये दर्शाता है कि आप अवेयर हैं अपने खेल को लेकर। स्ट्राइक रोटेट करना इस समय बहुत जरूरी, बाउंड्रीज आएंगी नहीं उतने अच्छे से, लेकिन अगर स्ट्राइक रोटेट होगी तो स्कोर बोर्ड चलता रहेगा, और स्कोर बोर्ड चलेगा तो रन रेट मेंटेन रहेगी, रन रेट मेंटेन रहेगी तो इस बीच अगर कोई विकेट गिरता है तो आने वाले बल्लेबाज के लिए भी आसान होगा। 12 ओवर हर साइड पर खेलने हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रन्स आप खेलें। जितने कम डॉट बॉल खेलेंगे उतना ज्यादा आसान रहने वाला है। लेकिन ये ओवर थोड़ी सी राहत लाता हुआ, कसा हुआ ओवर, किफायती ओवर अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। आगे की तरफ गेंद बल्ले के नीचे उठाकर मारा, नीचे खिलाड़ी, और हाथ से छटकता हुआ ये मौका, दूसरा विकेट हो सकता था इस ओवर से, लेकिन बहरहाल किस्मत का साथ मिलता हुआ 8 ओवर इस बीच यहां पर पूरे होते हुए 8वें ओवर से आए हैं 3 रन 1 विकेट और 66 रन बोर्ड पर। 3 विकेट के नुकसान पर द इंडियन सनराइजर्स नौवें ओवर की शुरुआत होती है, ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद, अच्छा शॉट कवर्स में और मारते ही दौड़ पड़े। और ये जरूरी है इस समय
द इंडियन सनराइजर्स के लिए कि हर एक गेंद पर आप कम से कम सिंगल जरूर बटोरे, क्योंकि रन अप बॉल रहेगा तो करंट रन रेट के हिसाब से आप 90 प्लस कोशिश करेंगे। इस बार खींचा हुआ वो गेंद मिसफील्ड, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ा और बेहतर करना होगा, थोड़ा गेम प्लान यहां पर अब जरूरत, क्योंकि घटते ये तेजी के साथ ओवर जिसके चलते आप हर एक गेंद पर रन चाहेंगे और वो जरूरी भी, क्योंकि जितने रन आप यहां से बटोरना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपके गेंदबाजों के लिए भी आसान होगा उस स्कोर को डिफेंड करना। कप्तान के पास मौका रहेगा कि आप गेम प्लान अपने बना सके, अगर एक फेल होता है तो दूसरा आप बेहतर तरह से एक्सक्यूज करते हुए, और एक बार फिर से अच्छा गेंद और कर दिया है क्लीन बॉल, सही ठिकाने पर वो गेंद, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बल्लेबाज ने, क्योंकि जिस तरह का एक्शन है उसके चलते लग नहीं रहा था ये गेंद सीधा यॉर्क करेगी, और सही ठिकाने पर वो गेंद, और चारों खाने जीत के आए यहां पर बल्लेबाज को, और संजीव गुप्ता के रूप में एक और झटका यहां पर लगता हुआ था। इंडियन सनराइजर्स चौथा विकेट गवाती हुई 8.3 over 69 runs on the board. बढ़िया ओवर, और पिछले 2 ओवर में 2 विकेट मिले हुए हैं, जिसके चलते थोड़ा सा दबाव, और एक बार फिर यहां क्या सोच रहती है, क्या यहां पर एक और मौका बनेगा रन आउट का? डायरेक्ट हिट होता तो शायद परेशानी बन सकती थी, और वो 5वां विकेट होता द इंडियन सनराइजर्स का। और फिलहाल जो गेंदबाजी का निर्णय था वो पूरी तरह से सही साबित होता हुआ, क्योंकि रन्स आपने ज्यादा दिए नहीं, फाइटिंग स्कोर जरूर है, लेकिन इस फाइटिंग स्कोर को आप दबाव में किस तरह से करते हैं तब्दील, ये देखने वाली बात होगी। अटैकिंग फील्ड आप देखेंगे नए बल्लेबाज के लिए, कप्तान हर मुमकिन कोशिश करते हुए सनराइजर्स पर थोड़ा सा शिकंजा कसने की कोशिश, जिसमें अभी तक मिली है सफलता, और रोटेशन बेहतरीन तरह से अपने गेंदबाजों का, जिसके चलते विकेट मिला है। और छोटी छोटी साझेदारियां भले ही बनी हो, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा अभी भी जो लक्ष्य आप चाहते हैं यहाँ पर 90 प्लस, उसके लिए और जी हाँ, धीरे धीरे ये पारी जो है समाप्ति की तरफ बढ़ती हुई, और यहां से रन आना बहुत जरूरी। स्क्वायर लेग की तरफ ये शॉट, लेकिन जब तक थ्रो किया जाएगा एक क्विक सिंगल मिलता हुआ यहां पर सनराइजर्स को, स्कोर बढ़ता हुआ 70, 8.5 ओवर 7.92 करंट रन रेट, एक्सपेक्टिंग स्कोर 95। निधि एन भारती फिलहाल इस समय क्रीज पर, और 5वें विकेट की तलाश यहां पर कितनी जल्द पूरी की जाती है। एक बार फिर से अच्छा शॉट, बैकफुट पर वेट को ट्रांसफर किया, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन
और गैप तलाशने में मिलती हुई सफलता सिंगल्स डबल्स के साथ फिलहाल पारी यहां पर बढ़ती हुई 9 ओवर इस बीच पूरे होते हुए द इंडियन सनराइजर्स के 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दबाव जरूर, लेकिन एक फाइटिंग स्कोर की तरफ इस समय नजर आती हुई विकेटें गिरी जरूर। स्कोर बोर्ड पर अगर आप नजर डालें तो शुरुआत जिस तरह से चाह रहे थे उतनी अच्छी मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज रन आउट्स ज्यादा देखने को मिले और दोनों ही सलामी बल्लेबाज रन आउट हुए। एक अच्छे स्टैंड की उम्मीद थी, एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी, लेकिन पहला विकेट 30, दूसरा 61, उसके बाद 2 क्विक विकेट्स वसीम और संजीव सर, जिसके चलते थोड़ा सा वो विराम, थोड़ा सा वो स्पीड ब्रेकर्स स्कोर बोर्ड पर लगाए गए, जिसके चलते दबाव में जरूर, लेकिन यहां से फाइटिंग स्कोर की तरफ जाना होगा क्योंकि आपके पास अभी भी 3 ओवर यानी 18 बॉल्स हैं। उन 18 बॉल्स में आप कितने रन बनाते हैं? अटैकिंग फील्ड, फुल टॉस गेंद, अच्छा कनेक्ट किया है, गैप में वो गेंद है, पीछे एक लंबा चेज, जब तक थ्रो किया जाएगा 2 रन आसानी के साथ यहां पर पूरे होते हो। रनिंग बिटवीन द विकेट इस ग्राउंड पर बहुत ज्यादा मैटर करते हो। जिस समय आप आसानी के साथ बाउंड्रीज हासिल नहीं कर पा रहे उस समय आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर गैप में जब वो गेंद जाए तो आपको पहला रन तेजी से लेना होता है। एक बार फिर से डीप करता हुआ वो गेंद, एक बार फिर से अच्छा कनेक्शन, लेकिन इस बार 1 रन के साथ संतोष करना होगा, लेकिन रन के लिए दौड़ पड़े हैं, कॉल उतना बेहतर रहा नहीं और इसी के चलते एक और विकेट यहां पर मिलता हुआ, एक और झटका। सनराइजर्स की पारी का ये तीसरा रन आउट, स्कोर बढ़ता हुआ फिलहाल 74 रन, 5 विकेट मिस फील्ड, सेकंड रन, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और ग्राउंड बड़ा है। लगातार मैं बात कर रहा हूं इस चीज की क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, गैप में अगर आप धकेलते हैं गेंद को तो 2 रन निश्चित तौर पर, और उस बीच अगर इस तरह के मिस फील्ड हो तो 2 से 3 भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि 3 रन आउट हुए हैं इस पारी में और फिलहाल 10वां ओवर, 3 गेंदे अभी आना, 2 गेंदे माफ कीजिएगा इस ओवर से आना अभी बाकी और 3 है। भाई नहीं चलाना, पटका हुआ गेंद, कनेक्शन इतना अच्छा हुआ नहीं, लेकिन गैप में वो गेंद, एक लंबा ग्राउंड कवर किया वहां से और ये कमिटमेंट कुछ एक रन्स बचाते हुए यहां पर फिलहाल द इंडियन सनराइजर्स के लिए ये 10वां ओवर, 78 रन बोर्ड पर। आधी टीम डगआउट से इस मुकाबले को देखती हुई क्या सोच रहने वाली है कप्तान की, क्योंकि अब फाइटिंग स्कोर आपने बना लिया, अगले 2 ओवर में कितने रन आप जोड़ पाएंगे और उसके तहत किस गेंदबाज को आप आजमाते हैं। शुरुआत में फुल टॉस, ये गेंद एक बार फिर से, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन की मांग जरूर होगी और निकल पड़े दूसरे रन के लिए और ये एक और मौका बनता हुआ। जी हां, एक और रन आउट, आज रन आउट ज्यादा देखने को मिले हैं।
छह विकेट 10वें ओवर से आखिरी गेंद का आना अभी बाकी। फिलहाल गिरते हुए विकेट परेशानियों का यहां पर सबब बनते हुए इस समय द इंडियन सनराइजर्स के लिए अच्छी शुरुआत 30 रनों की पहले विकेट के लिए साझेदारी, उसके बाद एक और बढ़िया साझेदारी 30 रनों की, लेकिन उसके बाद नियमित अंतराल में गिरते हुए विकेट। पहला विकेट 30, दूसरा 61, उसके बाद 64, 69, 74, 79, छठे विकेट निधि के रूप में फिलहाल यहां से एक और रन आउट। अच्छी वापसी यहां पर एलपीएस की, एक बार फिर से पटका हुआ गेंद, अच्छा शॉट एक बार फिर, लेकिन टाइमिंग उतना बेहतर नहीं कि फील्डर के ऊपर से अगर वो गेंद निकलते तो एक अच्छा शॉट कहा जाता, लेकिन इस बीच सिंगल के साथ एक और बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है इंडियन सनराइजर्स 80, 6 विकेट के नुकसान पर। 9 रन इस ओवर से भले ही आए हो, लेकिन 2 रन आउट भी इस ओवर से आए हैं, तो आखिरी 12 गेंदें इस समय द इंडियन सनराइजर्स के लिए, और कितने रन यहां पर रोक पाते हैं एलपीएस, ये देखने वाली बात रहेगी। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी आमंत्रण मिला यहां पर सनराइजर्स को पहले बल्लेबाजी का, और अच्छी शुरुआत, एक फाइटिंग मुकाबला अभी तक देखने को मिला, बराबरी पर दोनों ही टीमें जहां रन्स आए हैं, तो वहीं अब पिछले कुछ ओवर्स में आप विकेट देखेंगे। पटका हुआ गेंद, अच्छा कनेक्शन, गैप में वो गेंद, लगातार गैप तलाशते हुए यहां पर सनराइजर्स के बल्लेबाज, जिसके चलते करंट रन रेट 8 रन प्रति ओवर लगभग यहां से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ। विकेट की तलाश थी, शुरुआत में उतने विकेट मिले नहीं, लेकिन यहां विकेट मिले हैं और लगातार विकेट मिले। और क्या यहां पर एक और रन आउट होगा? जी हां, एक और रन आउट, तो लगातार विकेट मिलते हुए एलपीएस और सनराइजर्स। Down. 81, loss of 7. अच्छा शॉट, गैप में वो गेंद, मिसफील्ड के चलते अच्छा बैकअप वहां पर, और ये अवेयरनेस, टीम वर्क इसे अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपको हर एक खिलाड़ी को बैक करना होता है, और अगर ये फील्डिंग बेहतर है तो दर्शाता है कि आप अपना 100% देने की पुरजोर कोशिश करते हुए, और एलपीएस के लिए जरूरी होता हुआ यहां से हर एक रन बचाना, जबकि द इंडियन सनराइजर्स के लिए जरूरी है हर एक रन के लिए यहां पर कोशिश करते रहें, ताकि जब गेंदबाजी के लिए मौका मिले। एक बार फिर मिक्सअप हुआ, एक बार फिर यहां विकेट का होगा नुकसान, क्योंकि तालमेल में कमी और उसका खामियाजा आपको विकेट के तौर पर लगातार भुगतना पड़ रहा है। छह रन आउट, 8 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 6 रन आउट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सोच विचार करना होगा जब अगले मुकाबले के लिए इंडियन सनराइजर्स मैदान पर होंगे, क्योंकि ये जो विकेटें गिरी हैं की भरपाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से खींचा हुआ गेंद, अच्छा लेंथ पर पड़कर उछाल भी मिली उस गेंद पर,
और उसको अच्छे से मैनेज भी किया यहाँ। फिलहाल 85 रन, 8 विकेट और एक और बढ़िया ओवर फिलहाल इस बीच चलता हुआ। पुरजोर कोशिश यहाँ पर रन्स रोकने की, लेकिन 10वें ओवर से 9 रन आए थे, 2 विकेट 2 रन आउट हुए थे और यहाँ भी रन्स कम आए हैं लेकिन रन आउट्स लगातार होते हुए इस बीच एक और डॉट बॉल, और इस डॉट बॉल के साथ ओवर फिलहाल यहां पर समाप्त होता हुआ। 11वें ओवर से आए हैं 5 रन 2 रन आउट और स्कोर पहुंचा है 85 ऑफ लॉस ऑफ 8। आखिरी 6 बॉल इस पारी की द इंडियन सनराइजर्स के लिए और 2 विकेट दूर LPS क्या यहां पर ऑल आउट कर पाएंगे? क्या यहां आखिरी 6 गेंदों में स्कोर जो है वो 90 के पार या 100 के पार जाता है? अनुपंसल और तरुण शर्मा एक बार फिर से डाउन द लेग साइड, पैर पर लगी हो गेंद, अच्छा कवर करते हुए यहां पर कमिटमेंट के पूरे नंबर यहां से मिलते हुए फॉलो किया बल्लेबाज को और थोड़ा सा डाउन द लेग साइड वो गेंद थी, छोड़ना चाहते थे, शरीर पर लगी डॉट बॉल के साथ। 12वां ओवर फिलहाल यहां से शुरू होता हुआ। द इंडियन सनराइजर्स 85, 8 विकेट, 7.5 से ज्यादा का करंट रन रेट। आगे की तरफ एक बार फिर से थोड़ा सा नीचे रहता हुआ और ये रन्स रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप एक एक रन्स की अहमियत आपकी अब यहां से बढ़ती जाएगी क्योंकि ये आखिरी ओवर है और किस तरह आप दबाव और बना पाते हैं। बढ़िया शॉट, बैंड रखा खुद को और गेंद उतना उछला नहीं लेकिन उसके बावजूद कैप में धकेलते हुए और एक और सिंगल यहां पर मिलता हुआ तो 88। इस बीच स्कोर और एक अच्छा ओवर वाइड प्लस सिंगल और सिंगल, यानी अभी इस ओवर से 4 गेंदें आना बाकी हैं। क्या यहां जो शॉट की आप उम्मीद करते हैं एक बार फिर से यहां पर बाय के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ और अगर आप अतिरिक्त रन के लिए अगर यहां पर नजर दौड़ाएंगे तो थोड़ा सा यहां परेशानी बनाती क्योंकि 15 रन अतिरिक्त दे चुकी है यहां पर LPS और द सनराइजर। ये आखिरी के जो रन्स हैं वो कितने भारी पड़ेंगे, ये जो अतिरिक्त रन्स हैं आपने जो दिए हैं वो कितना भारी पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी जब आप चेज के लिए उतरेंगे। और इंडियन सनराइजर्स के लिए 90 रन फिलहाल इस समय बोर्ड पर। अगली गेंद एक और अतिरिक्त रन, एक और वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ इस वाइड के साथ 91 रन, 8 विकेट, 2 वाइड 3 वाइड इस ओवर से। एक बार फिर आगे की तरफ एक बार फिर मिस हुआ है और थोड़ा सा तालमेल में कमी, क्या यहां पर एक और रन आउट होगा और ओवर थ्रो जरूर यहां, लेकिन इस बार कोई मौका मिला नहीं दूसरा रन दौड़ने का, लेकिन रन्स आते हुए फिलहाल द इंडियन सनराइजर्स के लिए एक फायरिंग स्कोर आपने बोर्ड पर डाल दिया है और अब दारोमदार होगा आपके गेम प्लान पर, आपके कप्तान की रणनीति पर, आपके कप्तान के एक्सपीरियंस पर और किस तरह से आपने इस ग्राउंड को पढ़ा है, किस तरह से आप इस ग्राउंड को बेहतर तरह से जानते हैं, क्योंकि ये 6ठा सीजन आज के दिन का तीसरा मुकाबला और कोशिश फिलहाल यहां पर यही रहेगी कि जीत के साथ पॉइंट्स टेबल्स में खुद को रखें और एक और रन आउट, और ये एक और रन आउट यानी 7वां रन आउट इस पारी का एक रिकॉर्ड यहां पर।
लास्ट है लास्ट है बढ़िया शॉट, गैप में ये गेंद निकाल दिया, थ्रो जरूर हुआ है और यहां पर भागना मजबूरी थी और उस मजबूरी के चलते फिलहाल आखिरी गेंद पर एक और रन आउट, और ये रिकॉर्ड हो सकता है रन आउट्स का किसी एक पारी में। प्लस होगा ये क्या
इससे करो, इससे करो, इससे करो। करना ब्रेक चाहिए नहीं नहीं मेरा करने का मन तो नहीं है सारे छोटे याद आते करोगे हैं। आप? भाई साहब वो करूँ। निकालने वाले चार्ज मैं हाँ, इससे कर लो। आपने एक बार बोला मैं चाह बोल इस पे वो लगाना ना वो चाहे इसने दिया ही नहीं। So LPS, their batters are out there. They're looking to chase down this target of 94. So first runs on the board as far as LPS are concerned. They get a couple of runs there. So this should be an interesting run chase, this. 94, an interesting target. It won't be easy because the Indian Sunrisers have a very good bowling attack. Having said that, LPS is a well tight-knit unit. And all of their batters have the ability to bat and score big as well. Looks to work it away towards the offside. Swing and a miss. That one didn't bounce as much as he anticipated it to. And the Indian Sunrisers really pulling things back in the back end of that innings. Sweeps it away towards the onside. They come back for the second. Could be a run out at the non-strikers and they're celebrating. It is a run out, in fact. A wicket has fallen in the very first over. Another game, another run out. They were looking to come back for the second. And the technology confirms that it is a run out indeed. So the umpire's verdict was absolutely on point. LPS losing their first wicket courtesy a run out. So Aditi walks out. Final delivery of the over coming up. मैं वहाँ पे भाई कम से कम 15-20 बार कॉल कर चुका हूँ बिजी खा लिया नहीं इनके पास में ला रहा हूँ तो ये लोग ये तो साइड में बैठे हूँ बात कर रहे हो साइड में लो भाई बिजी हो कहीं So the skipper walks out. He's a new man, replacing the departed batter. And he's at the non-striker's end because the run-out was affected at the non-striker's end. So Nidhi has bowled a very good first over. He swings it away towards the onside, gets another single. In fact, they come back for the second. Could be another run-out. It is another run-out. What are they doing, LPS? The Indian Sunrisers are celebrating yet again. That was a suicidal run. There was no need for that. And he has to walk back. This is an exceptional start for the Indian Sunrisers with the ball. And this is exactly what I was talking about in the previous game. You know, you ought to bat well, you ought to field well. This third facet of the game, this is equally important, along with your batting and bowling skills. And 2 wickets and 2 run-outs. So sensational start. What a first over that was for the Indian Sunrisers. They've lost 2. 90 more required.
LPS at the moment 4 for 1. So the skipper will be facing his first delivery. Wasim with the ball in his hands. He'll be bowling the second over. The new batter is at the non-striker's end. And Satyam is straight away off the mark. And, we've talked a lot about Satyam in the previous season. He's such an elegant player, calm and composed. Generally plays the role of the sheet anchor for his team. But when provided, he's adept at switching gears. And once he's set and well settled, really difficult for opposition bowlers to remove him. That was quick. That was really quick. Darted in by Wasim. Straight into the wicketkeeper's hands. That's a punch straight back to the bowler. No chance of a run. Another dot delivery. Shivani Gupta yet to get off the mark. Swings it across towards the onside. Had to hurry there. Scurried away for a single. She's off the mark. Gets Satyam back on strike. So Satyam, predominantly a bottom hand player, so pleasing to the eye. A skipper as well. And that's a good shot. That is an exceptional shot. He knew where exactly the fielders were. Places it perfectly. And that's another boundary. In fact, that's the first one of this innings. Off the bat of the skipper himself. Width on offer. Throws his hands at it. And providing it that angle. Opening the face of the bat. So his first this one. And hopefully for LPS many more to come. Final delivery of the over. That's down the leg side. We'll have to re-bowl that one. Good take by the wicketkeeper. That's what you do. That's sensible. Got a boundary of the previous delivery and then a wide. Just pushes it away towards the offside, gets a single, will keep stride. A good over that for the batting team. Second gone, LPS, they are 13 for 2. So the start of the third over, the mandatory female over, this would be, we're still within the power play range. LPS at the moment, they're 13 for 2. 81 required of the next 10 overs. And the required run rate is almost 8.5. The bowler just making sure that the field is set to her liking. Satyam, the man on strike, plays it all along the carpet. There's a field at deep covers. Keeps it down to just a 1. And that single brings up Shivani on strike. That's a good looking stroke. Shuffles across her stumps and works it away towards the square leg region. She thought about a second there but sent back by her partner.
So you've got to count on Satyam as far as pacing and innings is concerned. He's so good at it. Look at that stance. Straight away, looking to confuse the bowler. Looks to shuffle. Pulls it slightly wide of the batsman. Just away from the tram line, signal wide by the umpire. We'll have to re-bowl that one. अरे भाई उसको हो गया उसका छोटा रह रहा है इसलिए बार बार उसको याद कर रहा है So Satyam takes it on the full, sweeps it away towards the square leg region once again, gets another single. So this has been a quiet over so far. सास कह रही है कि आपका छोटा है तो Satyam moves to 8. 77 still required. It's a big ask. All you got to do is play out your 12 overs, play out your quota, and ensure you don't play out too many dot deliveries as well. ये आते अरे रिव्यू ले रहे हैं तुमका किस चीज का 3-4 प्लेयर मार कर रखे हैं यार रिव्यू उसमें थोड़ा वो सारी जगह घूम रहा है क्या हां पिच पे रहेगा भाई हां 3 कैमरे में बांध देंगे किस चीज की नो बॉल फील्डर बाहर था कह रहे सारे जाटा मर रहा है जरा इसका कहां से लेकर आओगे देख भाई देख फील्डर कितने देखियो कितने फील्डर बाहर है दिखेगा कहां से भाई कैसे पता लगेगा भाई इसका थोड़ी ना इसका क्या फ्री यहां से देखो भाई देखो जो भी दिखता हो अंदर कानून में देख लो ज्यादा नहीं 25 कैमरे थोड़ी लगे हां नहीं इस वाले से चेक कर लो इनसे तो ना पता लगेगा भाई अरे नहीं पता लगेगा भाई नहीं होगा चेक पता ही नहीं लगेगा सर वो तो खुद मान रहे हैं ना कि हम अंदर से गलती से तो उनको लगा कि ये वाला वो है तो नोबल तो होगी ना फिर हमने अंपायर का डिसीजन है अंपायर का डिसीजन है बोलो तुम बोल हो जाएगी अगर वे मान रहे हैं तो मैडम कह रही है यार जल्दी जल्दी कर लो नहीं मान रहे तो बताओ तुम अंपायर भी सही ले हर चीज के लिए यूज कर देते मैडम कैमरे की लगा रखे भाई नो बोल ठंड लग रही होगी यार हमें इनसे लग रही है So yes, it is a no ball and it will be a free hit delivery. So Shivani has a license to go for it. She will swing hard. Free hit coming up. Here we go. She does swing it hard. That's in the gap as well. The fielder gets around it. She keeps it down to just one. Tidies it up nicely. Gets away with that one, doesn't he? Only a single on that occasion, and Satyam back on strike. Satyam batting on 8 at the moment. 75 still required. We're just into the third over. Remember, still within the power play range. And Nidhi has bowled well. All along the carpet, reaches to the pitch of the delivery. And that is exactly what I was talking about. Satyam, no matter where he plays, he's so risky, first of all. Especially through that offside when he plays his strokes. His stroke making is a delight to watch. Shivani back on strike. Meanwhile, 2 more deliveries to go in this third over. Shivani has faced 5 deliveries. Just coming over the wicket. Looks to swing it away towards the offside. Swing and a miss. Nowhere closer to the ball there was Shivani. Final delivery of the second over coming up. Was an eventful over, but no harm done in the end so far. That's ballooned up in the air. It's only a single, and she will keep strike. A decent over that, third gone, and LPS, they are 21 for 2. बजा दे अरे थोड़ी दो इसी माइक में करेंगे ना इसमें फिर जाएगा ना
So our senior commentator Rahul Juneja joins us. So first day of TCC season number 6. Meanwhile, that's a wicket. Well, Shivani was looking to play across. She was looking to work her way towards that square leg fence, and that's right through her legs, and she's been bowled. That's a wicket. Chandan straight away into the action and gets a wicket, and they've lost their third. So day one of TCC edition number 6. A new year, a new beginning. What do you make of this tournament? It's we're off to a slow start, but 3 more days of scintillating action coming our way. And what a wonderful tournament is happening in this beautiful ground. In fact, this action is being covered by JBMR Sports live, and such a great work they are doing in broadcasting all around the world. And that was a wonderful ball headed the block hall along with the team voice stations, JBMR Sports working along with this team. If we talk about our match official, that was quite away for the batter. Umpire calls it wide. Our match officials for today. Once again, Chandra goes away from the batter. Back-to-back wides. Yes, equation becomes its need of 69. They have around 9 overs left. And we thanks our, in fact, match officials who are doing great work. Firstly, we talk about our umpires, Mr. Dinesh, who's at square leg, while Mohit standing at stumps. Online scoring. Online scoring is being done by is also Mohit, and the special man who is doing offline scoring, the legend Ashwini Ahlawat. He's in this profession for so long. In fact, he also does umpiring. He's our local Simon Toffel. So yes, so far a score has reached 60. In fact, 64 needs to be chased down. 30 runs on board, and especially the way JBMR Sports is doing in the field of broadcasting, the way they do all the coverage, their commentary team, voice stations, they work along with voice stations, and look at it. The section is being covered by the sports channel. You can see live matches on Teachers Cricket Championship. Such as top matches are on. So here 4 overs are bowled. LPS has reached 32 with loss of 3 wickets. Equation becomes they need 62, and they have 48 balls left. And let's see where this match goes from here.
तेरी लाइन का पूछना ये फायरिंग का पूछता हूँ ओवर स्कोर पूछ रहे हैं अभी 62 ये बार स्कोर 4 ओवर कर दो यार हिंदी में करो रोक दे भाई और 4 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर 62 रनों की जरूरत संजीव सर ब्रिंग द फर्स्ट ओवर स्टार्ट्स विद द वाइड और जी हाँ यहां पर आस्किंग रेट जो है जी 8 के करीब और एक शानदार टूर्नामेंट यहां पर चलता हुआ 6th एडिशन टीसीसी का गुड थ्रो बाय सिमरन Nitin and Satyam right in middle while Satyam is batting at 14 of 10. Plays a soft hands. और जी एक स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर यूफोरियंस आगे बढ़ते हुए तो नो द टास्क इज नॉट that much big. Although this match is set as well poised at 50-50. Then at 59 they have around 8 overs left. Score has reached 35 with loss of 3 wickets. 5th over is running. 59 रनों की जरूरत यहां से goes towards cover region. पहला रन काफी तेजी के साथ VS with happy with single. बढ़िया थ्रो और यहां पर यही रणनीति दिखती हुई कि इस पार्टनरशिप को तोड़ने की जरूरत स्मार्ट गेम इज ऑन बाय दिस पेयर. नितिन प्लेस सॉफ्ट हैंड्स और बिल्कुल एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए goes towards a offside single is taken. और एक साफ स्ट्रैटेजी लगती हुई कि यहां पर अभी सिंगल्स डबल्स में बात करते हुए बड़े शॉट्स के लिए नहीं जा रहे हैं. And what it is, and yes it is, big fish is in. और हवा में खेला शॉट, एक बढ़िया कैच वसीम की और इसी के साथ नितिन को किया है चलता. And also, you know, talking about this tournament, as I said in the beginning, it's grander, it's bigger, it's better. And a new beginning as well. We are providing the live streams this time around. And JVMR Sports joining us on board. And they've done a wonderful job so far.
providing us all the angles. The replays have been fantastic, and as far as the technology is concerned, it has really helped us as far as our runouts at both the ends are concerned. So big thank you to Lokesh and Deepak and Neeraj from JBMR Sports. Nidhi, meanwhile, will continue. That was almost like an afterthought, that shot. Initially, he wanted to leave it, and he heaves it away towards the offside. No ball signaled by the square leg umpire, and that will be a free hit. Free hit delivery coming up. The new batter, Nisha, on strike. Where will she go? She swings it hard. Cross-batted shot towards the onside. Doesn't get all of it, but she's off the mark. Single to get away. And LPS at the moment, what they need is a concrete partnership. Every now and then, when they've looked to be in control, they've lost a wicket. And what the new batter needs to do is play along with Satyam. In fact, all the batters to come, they need to play around Satyam. That's a good-looking stroke towards deep point. And look at the awareness of the skipper. Came in running to provide backup to the throw. That is exceptional. And that is why, this thought process, that time and again reminds us of one of the greats of Indian cricket, that is Mahendra Singh Dhoni. And we have given him the moniker of the great MSD, or we call him the Tala of TCC. Hasn't really got going with the bat so far, played just one innings, failed today, but as a skipper, he will be relentless, that's for sure. And what a player he has been throughout all the seasons of TCC. Keeps wickets, and towards the back end of the innings comes in. He stands in the pivotal positions all over the field and then comes into bowl when it actually matters, especially down the death overs. 50 more required of the next 38 deliveries. Swings it away towards the onside. Quick single. Tight single taken there. Satyam back on strike to face the final delivery of the 6th over. LPS approaching the 50-run mark. 5 runs short of 50. That's it hard. That's in the gap. Fielder gets across it. Could be a run out. I think he's just about made it. That's good running between the wickets, but once again, great awareness by the skipper. That's the end of the 6 at the halfway mark. LPS here 47 for 4. साइमन टॉपल बना दिया उसको। आज हमारा अंपायर स्कोरिंग कर रहा है। So yes, what do you reckon? I mean, JBMR have done a fabulous job, haven't they? भाई मस्ती ले लो तुम। Indeed, Rahul. JBMR Sports is doing fantabulous work. Yes, Nisha is on strike. And especially if we talk about this season, it's well crafted, we must say. In fact, we have covered previous 4 seasons of TCC, and the way this tournament is going way above, that is really great.
Goes through the gap. And as one more single is added, Euphorians reaches at 49. From here, they need to chase on 45 more. And in fact, that was a good acrobatic save by Sanjeev sir. And with this single 50 is up for Euphorians. And especially if we talk about if we talk about our Sanjeev sir, the way he shows his presence in field. Good connection is made by Nisha, who's on the onside. और बिल्कुल हम जिस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं संजीव सर की जो एक प्रेजेंस दिखती है मैदान में, जी हाँ बिल्कुल भी इट्स हार्ड टू जज हिज एज. ऐसा लगता है कि सिर्फ 20-22 साल का एक यंग लैड. इट सीम्स दैट कि एक 20-22 साल के एक यंग लड़का यहाँ पर मैदान में है, मगर जी हाँ अगर नंबर्स में बात करें उनकी एज की, सो इज 50 प्लस. इन फैक्ट इज 55. और एक अच्छा इंस्पिरेशन, एक बेंचमार्क इंस्पायर करते हैं यहाँ पर लोगों को, जिस तरीके से मैदान में इलेक्ट्रिक दिखते हैं. सो फुल मार्क्स टू संजीव सर. That's news to me because I never knew he was 50 plus. I mean, who would say? But one thing I don't agree with you is that he's still young. He's still young at heart. And what a player he is for his team. That's a wicket. Meanwhile, Riyazul into the attack, bowling his first over, and he's cleaned the batter up. Bowls it straight, bowls it quick. And the off stump. That has been dislodged. That's a wicket. LPS, just as it was looking, another partnership was brewing. They've lost another one. They've lost half their side now. They're at 52 for 5. So, not only the skipper of the Indian Sunrisers, we saw Sanjay sir in the first match. He was running so hard between the wickets, and I was just told that he's the oldest member in this TCC Championship League. And who would say, he was running so hard between the wickets, giving his all, and that is the essence of this tournament. And this unique format where it's almost like a mixed doubles tennis match. Female players, male players are playing together as a team and playing as one. And once they are inside those boundary ropes, they are like warriors. They give it their all. They're fighting it out for their teams. And we get those heated moments. There are exchanges because that happens in a game, because everybody is in it to win this one. But once off it, you can see the friendly gestures. It's all hugs, lovely talks, nice gestures. They're all the best of buddies off the field. I can vouch for that. And meanwhile, another single taken. And that is why this has been such a fantastic tournament. And it's going from strength to strength. And we're only getting started this season, the 6th season in progress.
We've had two games, two fantastic games. One was a low-scoring affair and a gripping contest, and the other one was a high-scoring one. The winners are the champions from last season, clinching their first game, and it's yet to be seen, will it be LPS or will it be the Indian Sunrisers winning the first game? It's always crucial when you're heading into this big tournament. Just away from the fielder, there is protection though. And look at the backing up. All the fielders approaching the ball, making sure the slightest of lapse won't cost them a single run. And that tells you that they've worked on this aspect of the game. They've got plans. Final delivery of the 8th. Slower through the air. Beating the batsman all ends up. That's a good over in the end. A wicket coming off at 6 runs. So 8th gone. LPS, they are 58 for 5. 36 required of the next 4 overs. And the positive for LPS is that Satyam, the skipper, is still out there. He's looking good. So talking about the skipper, he's back in the thick of action. Wearing jersey number 19. He's picked up a wicket in his first over. Straight away making an impact into this game with the ball. Looks to go down on one knee. Works it away towards the onside. Gets another single. And singles won't do. They need at least one big hit every single over from here on. The score moves to 60 for 5 at the moment. Satyam is back on strike, batting on 26, looking as fluent as ever. But can he close this game? That is the important question. He'll believe that as far as he's out there, it will happen. And that is the belief that even the team has around him. All they've got to do is play around him, play around the skipper. That's what they've got to concentrate on. Manish batting on 2. He's got long levers. Can swing it hard. Goes for it. As he picked him up, he's picked up another one. That's the Maverick at it again. He's picked up his second. And bringing his team back into the game. If not with a bat, he'll do it with the ball. What a player to have in your team. A true MVP. Bowling the cutter. And the batsman was looking to swing it away towards the onside. Misses it, all ends up. What a delivery that was. This is sensational stuff. LPS once again on the back foot. They're 61 for 6. So Sakshi is the new batter. She'll be facing her first. Swing and a miss again. This has been an exceptional over. Apart from that wide, he's done everything right in this over. And that shows you the experience. He's that mighty old fox. Has got all the tricks in the book. What a cricketer. Exceptional once again. Could be a run out. And a direct hit to top it off. That's the icing on the cake. He can bowl, he can bat. Exceptional wicket keeper. Ground fielding has been excellent. And a direct throw as well. And it's the dangerous man as well. Skipper to skipper. That is the big fish who departs.
The Lone Ranger, Satyam, has departed. What a big wicket in the context of the game. What a turnaround we're witnessing. It's the magician once again doing it with the ball in the field as well with direct hits. Final delivery of this fabulous over. Beaten again, just 2 runs and a wicket and a run out as well. Exceptional over. That's the end of the 9th. And they're 61 for 7 after the end of the 9th now. And they require 33 more of the next 18 deliveries. Well, it's once again that man, the myth himself. What do you have to say about this legend who's back behind the wickets now? Well, Rahul, what to say about Sanjeev sir? I must say he's like a Sankat Mochan for his team. और जिस तरीके से यहाँ पर अपनी टीम को लाकर खड़ा कर दिया है, सिर्फ 3 विकेट दूर इस विक्ट्री से, और इक्वेशन जो बनती हुई इट्स लाइक दे नीड 30 और 16 गेंदे हाथ में 64 रन पर पहुंचा हुआ यूफोरियंस। खेल दिया बड़ा शॉट विद इट लैंड्स और एक बढ़िया कैच यहां पर, एंड ये सिमरन वाज देयर। और क्या अच्छे खिलाड़ी छोड़ देते हैं। And one more wicket is down of Euphorians. And what a catch has been taken by Simran. She's a true performer, I must say. Throughout in all the tournaments, in all the previous tournaments, she has proved herself. And yes, and one more wicket is down. And this catch goes to Nidhi. Wicket. ऐसा नहीं दूसरा है, नहीं वो मैं म्यूट मारा था भाई। Yes, ends with a dot. So such a wonderful over is being bowled by Wasim. Backs 2 wickets. In his 3 overs, he has given away only 17 runs and 2 wickets to his name. A great performance by Wasim.
and especially we were talking about that catch. And in fact, in lots of corporate matches, we have seen these catches are not being picked by a lot of players, but with the kind of focus we see in Simran, especially in fielding, she has proved herself all the time. Sanjeev Sir once again in his 2 overs he has given away only 8 runs, 2 wickets to his name. It looks like अरे वॉकी वॉकी है तो सही है दोनों छोड़ तीसरा मतलब once again dot comes. ब्रॉडकास्टिंग में कहाँ डालेगा भाई हमारे से कोई लेना देना नहीं उसका भाई तीसरा वाला थोड़ा डालेगा तीसरा पैर तो भाई हम जो पहले डाल चुके हैं वो तीसरा डलवा वो तुम देख लो ना इसमें लगा के रखा है तो वॉकी किसने दिलवाएगा अब वॉकी यहीं रख के जाओगे तो इसने तो दिए वॉकी कुछ मसला है वहीं पे मैं रोक दूँ उसको It looks like some confusion is there. And Rahul, what will you say? Such a dominating performance by the Indian Sunrisers once again, and really they are performing in this match. It's showing they have come out with their full strength, and the character is being shown by, especially by Sanjeev sir. He always comes forward. So what do you say about this match, this performance by the Indians? Well, it's a clinical performance by the Indian Sunrisers so far. They've been good with the bat, good with the ball, and exceptional in the field. Some fantastic runouts we've seen. So Sakshi and Deepika, they are the final pair out there. And Riyazul into his second over. This is a penultimate over. And yes, when you talk about these two teams, generally we speak about teams and them being well-rounded in all departments of the game. But I have a very strong feeling these two teams are really strong, right? But their players moreover revolve around their captains. It's more like captain-centric. Make no doubt about it, they're exceptional players.
सरोजिनी क्या लेने जा रहा है? ये जाएंगे ना नोएडा राहुल भाई। अरे राहुल भाई, हाँ गाड़ी लाएंगे तुम तो। और मेट्रो से ये जाएंगे ना नोएडा। कैसे हो मेट्रो? तो क्या मेट्रो से मैं भी जा ही रहा हूँ। जादू जादू भाई कहाँ जा रहे हो? जादू भाई तेरी अभी फोटो पे करवाना कैसे करेगा ये? किसको देगा? देखना हुआ क्या? हाँ, हो गया। ओए होए होए, कराना फटाफट पैकिंग करते हुए। जादू अरे करो यार भाई, हम भी निकले। बोलो ना। लाओ यार कुछ करो। ऐसे नहीं होता। अरे भैया यार हम पैकअप कर लेंगे यार भैया यार। अब इनको ये कैमरा सीधा दिलवा दो ना, ये वाला खाली वो उसको उतार दो सीधा ये ले वो पकड़। ओए पहलवान। आराम में ये बड़े कब होंगे? ये तो मैं दूसरी दिखाओ मैंने कहा जी अब वो कैसी है भाई? अरे वो झगड़ा कर रहा है। इससे जान लगा एक बोला दूसरी बोल देगा, वो दूसरी है वो निकले नहीं। चलने की लगी पड़ी है। आईसीसी ले ले पकड़े। लेफ्ट देखिए। हाँ वो कल डालेगा, ठीक है यहाँ हो जाएगी। चलो पैकअप बॉल जला लेंगे अगली बार। सर बॉल जला लो, नया डिवीजन आया, बॉल जला लेंगे मारो। नहीं मतलब स्टार्टिंग 4-5 ओवर से ही आएगी। ये क्या है? अरे वो बार-बार बोल तो रहा था मैच चलो। काम ही क्या है? राहुल भैया फोन कर देंगे भैया आपको अगर आना होगा तो मैच में होगा ना। चलो राहुल भाई कहाँ हैं? बुला रहे उधर वो। मैं भी थोड़ी बिजी हूँ। अंदर का ही काम तो है पूरा बकलोल इस मामले। अरे ये भी तो जाएंगे, रुक जा, क्यों भगदड़ी मचा रहा है? हमें पता दे रहा ब्याह हो गया भाई। चल तो ठीक है, निकल गाड़ी ला दो भैया। कल एक ले गया। हाँ नोएडा कल एक दे दी उसके वाइफ को, तो उसके वाइफ को दे दी। कह रहा बंदी लाऊंगा घुमा के। वो बहन अपनी बंदी को दे रखी हो, किसकी बंदी छिला की सारी, उसकी लाइट वाइट सब। यार लोकेश मैं नहीं जानता भाई, कम से कम टीम में एक बंदा लाओ जो नोएडा रहता है। ये मेरी शर्त है। अबे तुम कहाँ छोड़ोगे ये तो पता ही नहीं रे। तेरा बता रहा हूँ डोला को आ रहा है, ऐसे जाऊंगा मैं। भाई इसको बंद करो। क्या फायदा है? फीड नहीं आ रही है। इतना ही डोला को फीड क्या हुआ? बंद क्या हुआ? चालू नहीं है क्या? It's time for the presentation ceremony. Yes, we congratulate the Indian Sunrisers for winning this match by 26 runs. And yes, we have our observers, our captains with us. Yes, firstly, we go with the best batsman of the match. It goes to Satyam Malik. Handed off by this man, the captain of LPS, Mr. Satyam Malik, gets this award.
And yes, the baller of the match. Is any guesses for the baller of the match? Your captain, Mr. Sanjeev Gupta. Sanjeev sir. Sanjeev sir. Gets this trophy. And now it's time for the female player of the match. It's Simran. Took a wonderful catch. Simran. Such a super. ये अवार्ड वो दे तो अच्छा नहीं लगेगा आओ ना उन्हें आ जाओ And yes, Simran is getting the award from the daughter of Sanjeev sir, Smriti. And it's time for the star performer of the match. It's Nitin. Nitin sir gets a beautiful trophy of the star performer of the match. And yes, a few words from Satyam sir. Satyam sir, what went wrong? I think bowling थोड़ी better होनी चाहिए थी and fielding में we could have improved a little bit. बाकी I think it was a good match and a close game. Well played. Anything you want to say to captain? Good luck for the next matches.